Good morning, friends. My name is Suzanne. I take IPCC tax classes from KK sir, and our today's topic is exemption from capital gain, which is discussed from section 54 to section 54 GB. It's like invest in certain capital asset within certain time limit and claim exemption. But today I'm going to discuss section 54, which is transfer of residential house property or purchase or construction of residential house property. But there are certain conditions which need to be fulfilled. The first condition is that only individual or HUF can claim exemption under section 54. He can be a resident or non-resident. The second condition is that the asset which is transferred should be a residential house property, and that too a long-term capital asset. Any land or building appurtenant thereto and chargeable under the head income from house property, and the property should be located in India. The third condition is that the purchase or construction should be made within India, and the purchase or construction should be made within limited time before or after the due date. Zero date, sorry. And the fourth condition is the deposit scheme, which is discussed in section 54 subsection 2. It states that where the amount has been not utilized for the purchase or construction of new residential house property on or before the due date of furnishing of return, then the amount shall be deposited by him on or before the due date of furnishing of return in a deposit account under the capital gain account scheme 1988, and that deposited amount should be considered as the cost of acquisition of the new asset, and exemption can be claimed under section 54. Now, what is zero date? Zero date is the date of sale of original residential house property, and if an SSC plans that he would purchase or get his house constructed after the due date of furnishing of return, then the amount shall be deposited by him in a scheduled bank. And that deposited amount should be utilized before the expiry of the 2 or 3 years, as the case may be, in the purchase and construction of the residential house property. And due date of furnishing of return for assessment year 17-18 is 31st July 2017 and 30 September 2017. Any individual or HUF can claim exemption under section 54 for only one residential house property. Now, how to evaluate the exemption? So the amount invested in the new residential house property within the due date of furnishing of return gets the actual exemption, whereas the amount deposited in scheduled bank on or before the due date of furnishing of return gets temporary exemption. So what we get the balance is the exemption within the limit of long-term capital gain, which is either actual exemption or temporary exemption. Now, consequence 1. There are two consequences, consequence 1 and consequence 2. The first consequence is that what would happen if there is non-utilization of the deposited amount within 2 or 3 years from the zero date. So the first case is that if the amount is not utilized for the purchase or construction of new residential house property from the within the 2 or 3 years from the zero date, then the exemption claimed from the deposited amount stands withdrawable or is taken back. The second condition is that the exemption withdrawable is considered as long-term capital gain and is taxable after the 3 years from the expiry of the zero date. Now, how to compute long-term capital gain? So long-term capital gain can be computed by amount of capital gain that is exempted from the amount that is exempted earlier from the deposited amount,
and that is temporary exemption, and from that we would deduct the amount that has actually been utilized for the purchase or construction of the new residential house property within 2 or 3 years from the date of 2 or 3 years from within the zero date. So on that we will get actual exemption. The result would be long-term capital gain, which would be taxable after 3 years from the expiry of the after the 3 years from the zero date. Now, consequence 2 is that what would happen that when the newly acquired residential house property would be sold within 3 years from the date of the acquisition. So the first case is that short-term capital gain would arise as the asset has been sold within the 3 years from the date of the acquisition. The second thing would be that penalty gain would also arise because we have converted long-term capital gain into a short-term capital gain. So now how to compute short-term capital gain? So amount of capital gain that has been exempted earlier, that would be long-term capital gain, and in that we would add the actual short-term capital gain that has arisen from the sale of the new residential house property as it is sold within the 3 years. So that would be short-term capital gain, and the result that we would get would be short-term capital gain. Thank you. Friends, I'm Ritu. Today I'm talking about 54 सेक्शन जो कि हमें बताता है कि कैपिटल गेन में क्या क्या एग्जेम्पशंस हैं. तो एग्जेम्पशन हर एक चैप्टर में होते हैं. यहाँ पे 54 टू 54 GB तक है. तो आज हम सिर्फ 54 के बारे में डिस्कस करेंगे. 54 में 4 कंडीशंस होती है. सबसे पहली कंडीशन जो है वो कहती है कि जो 54 का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है वो एक HUF या इंडिविजुअली कर सकता है, चाहे वो रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, इंडियन सिटीजन हो या फिर फॉरेन सिटीजन हो. और सेकंड कंडीशन है कि जो होगा वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए ही होगा, जो हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा था. और इसके अलावा थर्ड कंडीशन इसमें है कि ना जो मतलब असेट जो हमें परचेज करनी होती है वो बिफोर या आफ्टर अलाउड, मतलब जो टाइम लिमिट दी होती है हमें उसी के अंदर करनी होती है, जीरो डेट, या तो उसके पहले या उसके बाद. तो इसमें 3 कंडीशन है, या तो जीरो डेट से एक साल के पहले या फिर जीरो डेट के 2 साल बाद तक परचेज करनी होती है. लेकिन अगर तब भी हम परचेज नहीं कर पाते तो हमें उसके 3 साल बाद तक वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना होता है. और इसके अंदर क्या होता है, फोर्थ कंडीशन होती है डिपॉजिट स्कीम. डिपॉजिट स्कीम के अंदर होता है कि अगर हम ड्यू डेट तक हमें लगता है कि हम अपना कंस्ट्रक्शन या परचेज कंप्लीट नहीं करवा पाएंगे तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि अंडर डिपॉजिट स्कीम के अंडर, मतलब जितनी हमें लगता है कि इतने अमाउंट में हम परचेज करेंगे या कंस्ट्रक्शन करेंगे जो भी, तो कुछ अमाउंट डिपॉजिट करा देते हैं. उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बराबर ही माना जाता है. और उस अमाउंट को जमा करवाने से हमें 54 का एग्जेम्पशंस मिल जाता है, तो वो हमें जमा करानी होती है. उसके बाद क्या होते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंस है कि अगर मान लीजिए कि हम नहीं करवा पाए, किसी वजह से परचेज नहीं कर पाए 2 साल के अंदर, या फिर कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो पाया 3 साल के अंदर, तो क्या होता है कि जितनी भी एग्जेम्पशन होती है 54 के अंदर वो विड्रॉ कर ली जाती है और उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान लिया जाता है. थैंक यू. मेरा नाम पूनम है. मैं सेक्शन 54 के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ. सेक्शन 54 इज़ ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ रेजिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी. इसमें 4 कंडीशन होती हैं. पहले एलिजिबल SSC होना चाहिए, सेकंड टाइम लिमिट होनी चाहिए, थर्ड ट्रांसफ़र लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए, फोर्थ डिपॉजिट स्कीम होनी चाहिए. इसमें एक जीरो डेट होती है. जीरो डेट इज़ सेल ऑफ ओरिजिनल रेजिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी. इसमें ये होता है. और जीरो डेट से पहले, बिफोर दी जीरो डेट, इसमें हम परचेज करते हैं रेजिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी विथ इन 1 ईयर.
ऑन आफ्टर, इसके बाद 0 डेट के बाद 2 साल का गैप मिलता है, उसमें भी परचेज करते हैं रेजिडेंटल हाउस। अगर हम नहीं कर पाते तो इसमें टाइम लिमिट दी होती है। अगर हम उसमें भी नहीं परचेज कर पाते तो उसमें कंस्ट्रक्शन 3 साल के अंदर होना चाहिए 0 डेट के बाद, इसमें ये होता है। और इसमें टी माइनस कुछ होता, हाँ कुछ होता था, याद नहीं आ रहा सर, मेरे को नहीं आ रहा, सॉरी।